Good morning, Dr. Kamlesh. Good morning, Dr. Kamlesh. Hello. Sir, good morning. Good morning, Doctor. Hello, Dr. Gaurav. Sir, Dr. Hello, am I Gaurav has audible? gone to a meeting. Yes, sir, you are audible. आवाज आ रहा है, sir. Okay, सही है. So students, our speaker for today is Dr. Kamlesh Kumar. He is a scientist at BSIP. He is a quaternary paleoclimatologist and has been working on the subject for a while. Sir, we have students from various disciplines such as geology, maths, computer science, and all the science background. So Okay. I would like you to start the lecture. Yes, thank you. Okay. Hello. Good morning, everybody. Yes, sir. बोलिए. Myself, Dr. Kamlesh. I am working here at BSIB Lucknow, and I am a quaternary geochemist. So before starting, I would like to introduce about the BSIP. What is BSIP? Where BSIP? Starting from its foundation, the Birbal Sahani Research Institute is a premier institute in the Paleoscience field, and it is situated in the Lucknow district, Uttar Pradesh, India. And its foundation was laid by first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, on 3rd. And after the 1 week, 10th April 1949, Professor Birbal Sahani was expired, and he was the founder of this institute. And after that, his wife, Mrs. Savitri Sahani, took the charge to initiate all the research and development which were carried forward by her later on. So initially, this institute was totally dedicated for the Paleobotanical Institute. Its name was Birbal Sahani Institute of Paleobotany. Later on, in year 2015, Professor Sunil Vajpayee, he took initiative to develop the several other facilities, instrumental facilities, and he took the initiation in year 2013. And after 1 or 2 years, several different analytical laboratories were established in the BSIP. So, coming to the presentation, just a minute, I want to share the slides now. Slide is showing there? No. Hello. No, sir, it is not. Your screen has not presented yet. How to share the slides? You know? सर फोन ये नीचे जो टैब दिख रहा है ना आपको, जहाँ पे वीडियो ऑन ऑफ का है, उसके बाजू में कैप्शंस का सीसी लिखा हुआ है. Yes, yes, yes. के बाजू में सर एक फेस इमोटिकॉन के राइट साइड वाला है ना, अप एरो वाला. Up arrow. हाँ, yes, it is there. हाँ सर, उस पे सर प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करेंगे ना, हाँ. तो सर एक क्रोम टैब, विंडोज और एक एंटायर स्क्रीन आएगा. Yes, yes.
सर एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो विंडो है वो उसको आपको एक बार सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर नीचे शेयर का ऑप्शन। जल्दी एक मिनट, तो प्रेजेंटेशन शेयर करना था। प्रेजेंटेशन आपने प्रेजेंटेशन खोली खोला हुआ प्रेजेंटेशन एंटायर स्क्रीन विंडो एंटायर स्क्रीन। सर उसको एक बार एंटर स्क्रीन पे क्लिक करके नीचे शेयर करेंगे, हो जाएगा। Sir, is it now visible? Yes sir, it is visible now. Okay. Thank you. So come to the today's topic, that role of analytical facilities of and instrumentation in the geochemical research at the BSIP. So first of all, in the BSIP, there are several research laboratories, and as we are doing in the geochemical laboratories, so why there is need? It's major concern of geochemistry in general and overall evaluation of abundance of the elements in the earth, crust, and major classes of rocks and minerals. However, misinterpretation of data, lack of understanding potential problems, and instrumentation can lead to incorrect conclusion from chemical data. Hence, analytical instruments are powerful tools when applied by those trained in the interpretation of analytical results. So this is the starting. Now come to the point, the research facilities at the BSIP. Because there are so many students, they are from different background, maybe geology, maybe some other subjects. So in the BSIP, there are here geochemistry facilities there. In the geochemical analysis, geochemistry laboratories, we have several type of equipments like XRD for the mineralogy, XRF for quantitative analysis of the major oxides, elements, trace elements, and we have 3 IRMS, isotopic ratio mass spectrometer for analysis of the carbon, nitrogen, sulfur, oxygen, and we have very old laboratory C14 chronology, and by this method we have estimated the ages of the sediments, which is not older than 50,000 years. So this laboratory was very earlier, very old laboratory, and recently we have established environmental magnetism and paleomagnetic laboratory. We have different type of equipments to identify the magnetic mineral concentration in the sediments, in the oriented samples in the rocks. We have the palynology. This is the backbone of the institute. We have the micropalynology and plant megafossils. We have the field emission scanning electron microscopy facilities. We have confocal microscope and Raman spectroscopy. We have the one branch where we can analyze the ages of the trees and their implication in the paleoclimatic studies. We have the ethnobotany. We have the fossil grains, migrations of the different type of civilizations. We have ancient DNA facility to fingerprint the ancient DNA genomics of the past plant, vegetable, plants, as well as the animals DNA. We have the entomology where we studied the insects that they trapped inside the amber. And we have the industrial palynology, its implication in the ONGC, oil and petroleum sources. We have the coal petrology lab, we have the vertebrate paleontology, and we have the marine micropaleontology, and many more other laboratories are also we have not included in this. So our main focus is on the geochemical analytical facilities which are present inside the BSIP. So come to the analytical informations. How we can get the analytical informations from the samples, like analysis of source, isotopic composition, and its origin. Initially, when we collect the samples from the field, whether it is a rock or any soft sediment, and the sediment may be collected from the some fluvial sequences, maybe from the lacustrine sediments, from the some aeolian sediments, from the some other deserts areas, different locations where we collect the samples. So we can analyze the source and its isotopic composition and its origin. Then come to the next point is the quantification. How much? Whatever
the elements, whatever the isotopic composition, how their quantity, and after that the substance identification, that what is the substance. Then there are the several instruments in the BSIP geochemistry facility. Like this is an ICP-MS. It's an inductively coupled plasma mass spectrometer. This is IRMS, isotopic ratio mass spectrometer. And this is the XRF, X-ray fluorescence. This is one other technique which we have established, that the TL and OSL luminescent dating. And this is the XRD facility. This is the GCMS. We have the FTIR and other instruments also. So there are several variety of sediments and samples, and we analyze here. For paleoclimatic informations, we deal only the ocean sediments, terrestrial sediments, paleosols, ice cores, soil carbonate, soil and lakes. Because these are the only sites from where we collect the sample, we can get the information to infer the past climate, and by analyzing the past climate, and we can predict the future model for prediction of the monsoonal variability and other paleoclimatic future climatic informations for the better understanding. So what is ahead? First of all, there are several instruments, so we have to understand the basic principles of the instrument. That is very important, because without knowing the basic principle of the instrument, we cannot get the correct data. Because a machine is, if it is uncalibrated and you put your samples and just give the commands, it will give certain values. So first of all, we have to know the basic principles of the instrument, how, on what principle a particular instrument works. And if there is any problem or any error in the functioning of the instrument, definitely if you put the sample in the sample holder or something else, then definitely that machine will give some numbers. Whether those numbers are they are valuable, they are correct numbers or not, then you have to check yourself. Once you don't know the functional principles and analyzing the first of all standards, then whatever the data will give, that will be the right data. And what is its working, how this particular machine, any machine works, and if, what is after getting all those data sets, how you will apply in your research field. So this is the basics of any instrument, whether this IRMS or GCMS or XRD or XRF. Every instrument has their own basic working principles. So come to one by one. We are not going into the details of each instrument. Tomorrow we will deal in the details, the working principles of the XRD, X-ray diffraction diffractometer, and X-ray fluorescence, how they works in the geological samples. Because we people are working in a Paleosciences Institute, so we deal only the rock, soil, or sediment samples. So no doubt there are several applications, like XRD is applicable in the pharmaceutical companies, like in the cement industries, or any others. Same way, the XRF is also used in the pharmaceutical companies, some food industries also, and some other forensic sciences also. So their application is wide spectrum, but we are dealing only the rock samples. So our main focus is to get the paleo informations both from the soil, rocks, sediment, and sediment from all the sites. So come to the I am the experts of the X-ray fluorescence and XRD instrument. So we are dealing only two instruments, but my other colleagues they are dealing other instruments. So cumulatively we have working in the similar in a single umbrella, and that comes under the geochemistry facility at the BSIP. So come to the one XRD. This is the X-ray diffractometer. XRD is the basic machine where we can get the diffraction patterns of the different atoms, different atomic planes in the sediments. So its main source is the X-ray. I think most of you will definitely know what is the X-rays, what is the property of the X-ray, and how these X-rays are generated inside the instrument. And when these X-rays are generated, and
generated X-rays falls on a particular sample, they get diffracted. And what is the diffraction also? So these are the minor things. Once you know the diffraction, what is the X-ray, what is the X-ray, the electromagnetic in the electro EMR, where the X-ray falls, how is the its wavelength, what is the frequency. So these are the basic fundamentals we have to know. This is the X-ray property, and what is the X-ray property. So in this particular equipment, there is this is the X-ray source. Here is the X-ray source where X-ray are generated, and these X-rays falls by this particular. There are some slits and other things are there. These X-rays falls on the sample holder, and after diffraction, these diffracted X-rays are detected by the detector, and this is the goniometer. And this goniometer, this works like once there are two ways. Either the sample will move or this particular X-ray source will move. So in this our machine, the sources, the sample holder is stable, it is stationary, and the X-ray source, it moves. So similarly, the X-ray if falls in the theta, then detector will detect at the 2 theta. So this is the basic principle, but there are some other details we will definitely discuss tomorrow. So in the X-ray XRD diffraction, this is the X-ray, goniometer, sample and sample holder, receiving side optics, and detector. So X-ray works on the Bragg's law. Bragg's law, n lambda equals to 2d sin theta, where XRD it's a very machine very angle from 2 theta, because the angle is always relative no incident X-ray beam trajectory. See, if it is X-ray source, it is a sample holder, and if the X-ray source falls at the theta, so diffraction definitely will be the 2 theta. And it's a cathode like copper, and molybdenum is a target because its melting point is very high, and orientation of different diffracting HKL plane in simple a number of these are not are possible. Once we analyze the samples, we get the such type of diffractions, and by analyzing these peaks, this particular peak give the identification of the particular mineral. So X-ray diffraction, basically it is a qualitative analysis of samples, because we get the informations from the samples how much, because all the soil or rock samples, mainly they are composed, maximum there will be the silica or quartz in the abundance. If it is a limestone, definitely then calcite or calcium carbonate will be the more. So in that there are two types of X-ray diffraction. It's the bulk mineralogy, and second is the clay mineralogy. Once we do the clay mineral analysis, we separate the quartz from the entire samples. Like this particular spectrum shows the clay mineral analysis. So we analyze the clay minerals from 3 or 5 to 40 degrees to theta, whereas the entire spectrum where we want to know all the mineral assemblies present inside the particular sample, then we analyze the samples from 0 degree to theta to up to 70 degree to theta. So it is a general spectrum of any clay mineral analysis. Then come to the second one. This is the X-ray fluorescence. This is XRF. We have wavelength dispersive X-ray. There are X-ray are two types: EDX and WD. ED energy dispersive, and this is the wavelength dispersive. So energy dispersive X-ray gives information not up to that level, which gives the wavelength dispersive, because in every element has certain wavelength where for the excitation. So once a certain wavelength of some energy will receive, then definitely the excitation will happen in the atomic state. So like how X-ray works. Suppose this is an incident X-ray and it falls on the K shell. These are the KLM shells. So if X-ray incident on this particular K shell, so definitely after receiving some energy, it will excite it, and it will, suppose the 2 electrons are ejected from here. So definitely the outermost the electron from the outermost orbit,
they will fulfill the gap, and once with that come from the lower energy level, definitely some fluorescence will happen. That fluorescence will measure by the machine, and it gives the quantitative some number, how much particular in the sample, how much sodium, like potassium, it is present, and it will give values in the always in the oxide forms. So it is the basic principle of the X-ray fluorescence. Inside how it works, it is a internal setup of the X-ray fluorescence. It is a source, X-ray source. It is a filter wheel. There different type of X-rays will be it will come out from this, and there is a sample, and there is a mass chamber. This is vacuum seal. This is a colorimeter charges. And this is a scintillation counter. There is a crystal changer for every element, every oxide. There are different type of crystals are there, and these crystals are in hygroscopic in nature. So before analyzing, we go for the tube reading before analyzing of any samples. So now, what is the advantage of these instruments? Because these instruments are very sensitive, very robust, and within a very short time, we can analyze a lot of elements. Like if we analyze the 10 major oxide, which are the major contributor of any upper continental crust or any crustal composition. They are the silica, they are the titanium, like aluminum, magnesium, manganese, calcium, iron, phosphorus, and silica and others. So X-ray fluorescence gives the best results if you analyze the major oxides. So we have X-ray fluorescence, and its contemporary is the ICP-OES, with inductively coupled plasma optical stimulated luminescence. So if you have the enough sample, if sample quantities approximately you had 10-20 gram of samples, powder samples, then initially you took the sample 6 gram sample up to 200 ml powder samples, make the pellet, and just add the 4 gram of boric acid, make the pellet of 10 gram, put inside this particular sample holders. It will take only 2 to 3 minutes to analyze all 10 major oxides, and its accuracy is more than 95%. The accurate value you will receive by the analysis of the X-ray fluorescence. Whereas if you analyze the samples by the ICP-OES, both machines are different, both principally different. But if you have if you have some marine core and you have some 1 or 2 gram of samples, so you cannot analyze, because for the X-ray fluorescence minimum you require 6 gram of sample. So we have both type of machines, X-ray fluorescence as well as ICP-OES. Recently we procured one. This is the glass bead fusion machine for X-ray fluorescence. So in this particular machine, you require only 30 milligram of samples and fuse it by using the lithium tetraborate and lithium metaborate. So these two chemicals are little bit expensive, because for analysis of the for X-ray XRF analysis, and if you analyze your samples by the boric acid as used as a binder, so its cost, maximum cost is 20 or 50 rupees. But if you make the pellet, glass bead pellet, like using the lithium tetraborate or metaborate, its cost will be 10 times more, like 200 to 300 rupees per pellet it will cost, and rest other expenses are included. This is the preparation cost of only sample preparation. But the data will be received by the pellet, glass bead pellet, as well as the press powder pellet. Is little bit 1 or 2% error will be definitely will be there. So, and if you have number of, like, if any student has more than 2 samples charges, so definitely we make that one.
But for the students, if they don't have the money and from the other sources, so we analyze their samples by using the boric acid as a binder. It's a very less time. We don't need any chemical for the processing, and it's a non-destructive techniques. It's a good precision and accuracy, and it's very simple spectra. These are the advantage because these two machines like XRD and XRF, if we use the sample by the X-ray diffraction, the same samples can be used to making the pellets. So like this, it's a non-destructive techniques and very rapid and very fast. Like within the 4 or 5 minutes, you can get the entire spectra of the total from the X-ray diffraction. But same way like the X-ray fluorescence, within the 3 to 4 minutes, you can get the quantitative analysis of the 10 major oxide. We can analyze the trace elements, but their detection limit is not up to that level which can give the ICP-MS. So we definitely, we people prefer to analyze the major oxides by the X-ray fluorescence, XRA machine, and we use the ICP-MS part to detect the trace elements as well as the rare earth elements. So when we use the data set from received from both these machines, then we can interpret, and definitely when after getting the data set and once we write the paper, so at that time reviewer will definitely he ask if you analyze and if you write that we have analyzed the trace elements as well as element by the XRF, and definitely they will ask so many questions, how you analyze and which type of protocol you follow. We can analyze, but there are different type of other protocols. So we generally prefer to analyze our samples on the ICP-MS. Then come to the mass spectrometer. This mass spectrometer part is the major part of the IRMS, GCMS, as well as the ICP-MS. So all these instruments are works basically on the spectrometer. Here, one thing is very important to analyze your samples on these machines. You have to prepare your sample, and there is so many consumables like acids and other things are involved, and their preparation time is it took time. So, but basic principle of all the three equipments are the same. But first of all, just prepare your samples, put in the sample holder. Already nowadays, earlier it was you have to all the time you keep updated and put the tube your different samples. But nowadays we have the auto samplers. We put the 2% HNO3 in the one particular cylinder. We put the milky water, and the rest of the other tubes we put the samples. So once one sample will be sucked by the this auto sampler, and automatically it will go for the rinsing. It will go to the 2% nitric acid again. It will come and it will go to the milky water again. It will go for the 2% nitric acid. Then it will took the next sample. So it is now totally automated. You just put your samples, 100 samples. There are a number of areas there. I will show you in the next slide. I think there is some one photo is there. So totally automated, but it took some time for the preparation of your samples. Because if when you prepare a sample for the ICP-MS, you have to be very cautious, because you make the solution of your samples in the millicube water. Its conductivity is 18 milliohm. So because if you put the samples in any such type of container, like you put their samples in a glass, like some beaker or some volumetric flask, it will extract the silica and other some cations or anions from that bottle. So we just prefer to store the samples in the polypropylene, some centrifuge tubes, and because it's sample preparation is also very costly for the ICP. Like in our this analytical charges, we charge only the 1500, 700 sample for one sample for the XRF, whereas once you analyze your sample on the ICP-MS, it's cost you 4,000 to 5,000 rupees per sample. So, but anyway, these machines are very good machines and gives the very good data set. And if you analyze your sample on ICP and put your in the results and discussions, so now recently we submit one paper. So
the data you are getting, and after raw data and after calibration. So reviewers ask the original data file from that generated by the instrument. So now the reviewers ask from those, that files also. Now come to this instrument using mass spectrometer. So it's a mass spectrometer like this ICP-MS. It has a quadrupole. Another is a magnetic sector, and this basically dependent upon the mass oblique charge ratio. So once the samples will go inside, it will separate it out by the mass oblique charge ratio, and different type of mass spectrometer, they will separate it out. There are some Faraday cups are there, and certain mass will be stored on that particular Faraday cups, and that will gives to the quantitative value of any sample which is going inside the this instrument. Like this is same way. This is the gas chromatography. GCMS gas chromatography mass spectrometer be used for the alkane, alkene, alkynes, polyaromatic hydrocarbons to analyze the aromatic compounds, aliphatic chain compounds. So for that we have the gas chromatographic mass spectrometer. This is the column chromatography. There is the carrier gas, the flow controller, input, injector port. This is a column, and here is a detector. So gas chromatography is used, and there are so many solvents we use for the organic polar solvents to detect the different type of organic molecules. ICP-MS gives the inorganic, whereas the GCMS gives the organic compounds, organic specific compound, like if some aliphatic chain compounds, cyclic alkane, alkene, alkynes, and their derivative compounds by the measured by the gas chromatography mass spectrometer. See, this is the GCMS. This is the auto sampler. All the samples are put inside, and this is a rotated auto sampler. One by one sample will come in front of the knob, and the knob goes inside and suck the sample and send to the this column, and when the sample go inside the column, and different fractions of the other polyaromatic hydrocarbon, they will separate it out, and finally once we go inside the detector, and their concentration will be detected. How much alkanes are there? How many number of how many carbon chains are there? So by this we can detect which organic compound is present in the particular sample. Its application: gas chromatography mass spectrometry is a geochemical technique applied to the study of organic matter composition, which includes alkane, fatty acids, alkenones, sterols, etc. And once we get these particular information of the alkane, alkene, alkynes, we can predict the paleo-environmental conditions, redox potential, hydrocarbon-related studies, biomarker identifications. This very robust machine. By this machine, we can analyze the elements from lithium to uranium. See, and once we put the sample, this argon gas is the carrier gas, and it ignites at the plasma temperature range up to 5,000 Kelvin to 6,000 Kelvin, up to 10,000 Kelvin. At that temperature, plasma generates, and this plasma goes through the different quadrupoles and magnetic chamber, RF chambers, and then it will detect it by the Faraday cups, and finally we get the concentration in the ppb or ppm level. This Agilent quadrupole 7700 ICP-MS mass spectrometer, we have this machine. Recently, this was purchased in year 2015. Now their updated model is again they have launched, and I think its cost is more than 1.5 crore.
So already we have this one. So definitely we have to update ourselves, and we are just now we are going to propose one new equipment, that is a multi-collector MCICP, multi-collector inductively coupled plasma mass spectrometer. We by that machine we can analyze the isotopes, different boron isotopes, strontium isotopes. These isotopes give the exact value, is the exact number to identify the weathering processes, provenance, and other things. So it is already in the process, and once our new building will be established, will be completed, and we will definitely will procure that machine also. This is the same. This is the IRMS. I have already told that how IRMS works. Now come to the other facilities we have also. We have some biotic proxies by the biotic responses of the climate change and environmental change. So in the first slide we are showing here, this is the pollen. Pollens, this is the diatoms, this is the foraminifers, and there is the dinoflagellates. So these are the microfossils, and these are the pollens are basically, these are the very microscopic and parts, and they generally receive some, they get trapped inside the sediment, and different pollens are preserved in different conditions, and they will give the information of the paleo vegetation. What vegetation was existed at particular that time. These are the diatoms. They are also is a algae, and they are found in the freshwater as well as in the marine. So by the countings, the morphology, like this is the circular diatom. So definitely, mostly these synthetic diatoms are present in the marine conditions. So those students which are working in the coastal regions and some estuarine zones, so they can do as a proxy for diatom as a proxy to link the land sea interaction and like transgression and regression. So how the sea level, presently sea level is maybe some few kilometers away, but in the ancient time, in the past time, maybe it was close to where we are sitting here. So for land and sea correlation, terrestrial and sea correlation, we can use this particular proxy to infer the paleo information and past climatic conditions. Similarly, they are the dinoflagellate, they are foraminifers. So basically, these proxies are basically used by the marine micropaleontologists. So we have the experts of all these biotic proxies and other like dendrochronology. Also, again, we have some expert in the dendrochronology. So because one proxy has their certain limits, like we have the instrumental records like up to not more than 150 years from today, present to the last 150 years. So from 150 years to like thousands, 1,000 years or 2,000 years, for that we have the tree records. We can reconstruct the paleo monsoon or paleoclimatic conditions by using the dendrochronology. But dendrochronology again, it had the limitations. You can get the best growth rings in the alpine regions, like where altitude is more than 2,000 meter or something else. So like in the Himalayas, we can get the dendrochronology because there is a difference in the temperature, monsoonal difference, temperature difference. So we can get the prominent range. Whereas where in the Lucknow, like subtropical regions, where we have the like mostly C3 type of vegetation. So growth rings are found by both the trees, but in the tropical region, the growth rings are not very prominent. So we cannot use dendrochronology in the Ganga plain or some subtropical regions. So for that, we have some stalactites record like cave deposits. So by using those, we can get some information. So likewise, we can get the past information like wetlands, we have lake sediments, we have the estuarine sediments, we have the bluebell sequences. So for the different proxies, their limitation is there. So by like if you are choosing any topic and if you are having some idea, your research problem, then you have to very cautious which proxy give you the best
which proxy give you the right direction in which we can get the maximum informations by that. Like suppose if anybody is working in the some lake system and he is trying to correlate, he is opting that like foraminifers and dinoflagellate and other thing, he will definitely got nothing. Likewise, if you are working like in the coastal regions, so definitely you can get palynology for those, it is those for the biotic proxy and pollen and diatoms. Accordingly, once you have the club both these proxies like biotic and abiotic, then all the things are supplemented by each other, and we can, once we have the multi-proxy records, then it is very easy to publish your research paper in high impact journals. See, like we have the IRMS and gas bench. IRMS have the two, there are two components. In this IRMS, it's a one column is there where we put the samples, bulk sample, and it gives the C3 stable isotopic ratio, the delta 13C values. By getting the delta 13C values, you can predict the past vegetation, whether it was C3 or C4. Again, by the gas bench, we put the sample in the carbonate form. And once it goes inside the sample, it will give the value of the oxygen isotopic value. So, oxygen isotopic value give you the past temperature. What was the paleo temperature conditions? Whereas the delta 13C of organic carbon gives you the what was the vegetation, and vegetation definitely its response will be the monsoonal. So indirectly we can predict the paleo monsoonal conditions, a monsoonal variability during the past time. So this particular machine gives the paleo temperature as well as the paleo vegetation record in the past time. This gas bench is mainly used by these forums. The marine micropaleontologists, they pick up the forums like 100 or 200 microscopic forums, and they crust it, and hardly it's required very small amount of foraminifers, and they just put inside the gas bench by applying the some SCl, some orthophosphoric acid, and it will liberate the oxygen. It will give the delta up to O18/O16 ratio. So by using several papers are there, Friedman and other, they have record the paleo temperature records in the past time, how the temperature was increased or decreased during the past time. So, but then after getting so many information from different proxies, biotic, abiotic, paleomagnetic, some other thing, what is the profit? Why we are doing all those things? So simply after getting your PhD or publishing so many papers, definitely everybody wants to establish his or herself to get the permanent opportunity for job position. So there are several opportunities like in the GSI, ONGC, Mineral Exploration and Corporation Limited, academics, coal industry, Baba Atomic Research Center, CSIR, industrial other research laboratories. So definitely, if you have the good number of publications, good data, and not only your job opportunity will give the so many valuable information to our policymakers to take the initiative for the future problems. It's what is the societal implication? Like geochemical data can be used, can be inferred so many things. Like by applying the geochemistry, you can go for the air pollution, for the agricultural uses, monsoonal prediction and variability, earth climate, how earth climate is changed. So I think this is all about what we are doing in the Birbal Sahani Institute of Paleosciences, and how we are going to link the different proxy records. Like my other colleagues are working in some biotic responses. So earlier, before 2014 or 15, our publication records were not up to that level which we have now, because now we are able to publish in the GRL, EPSL,
historical biology, earth and space chemistry, and so many so other high good journals. Earlier, when I was joined this BSIP, mostly the people are working on the this paleology and other proxies, and I was only the first one. We took the initiative to establish the geochemistry laboratory in the BSIP. Thank you so much. हेलो जी सर बोलिए, यू आर ऑडिबल. हाँ हाँ. If anything is any further discussion, we are ready. If any question, any query. Sir, I wanted to ask one thing. Yes. Sir, I'm currently working on groundwater chemistry in the eastern Gujarat, Dahod region. Okay. ईशान, you are not सही होगा क्योंकि हाँ हाँ फ्रीली आपको पूछिए फ्री. हाँ सर, तो मैंने जब ऑनलाइन पढ़ा तो दे हैव सजेस्टेड के एएस जो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईसीपीएमएस है, आईसीओईएस है. तो सर ये सेटअप के हिसाब से समवन हु इज डूइंग पीएचडी एंड कंसीडरिंग द इकोनॉमिकल फैक्टर, तो सर व्हिच टेस्ट वुड यू सजेस्ट कि मुझे करना चाहिए व्हिच विल गिव मी गुड रिजल्ट्स आल्सो एंड वोंट बी अ बिग होल इन द पॉकेट? मतलब व्हाट इज योर मेन व्हाट इज योर मेन ऑब्जेक्टिव? सर ग्राउंड वाटर केमिस्ट्री और ग्राउंड वाटर क्वालिटी. सी groundwater chemistry, it's a very big term. Right, sir. See, sir, उसमें भी sir the region that I'm working on has high fluoride and high nitrate contents in it, and there is an exposure of Aravali as well. So as per the experts during the PhD registration committee, so sir they have suggested that I should see if there are any heavy metal concentrations in that as well. क्योंकि the granitic exposure in Bhutan has concentration of uranium, they have said. सो उन्होंने बोला कि एक बार चेक कीजिए कि आपके एरिया में भी अगर अरावली का एक्सपोजर है तो क्या आपको हैवी मेटल का वहाँ पे कंसंट्रेशन मिल रहा है, क्या लेवल का है, क्या वो हजार्डस है नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था. आपने ग्राउंड वाटर सैंपल कहाँ से लिया, मतलब सोर्स क्या था, कैसे लिया? सर ग्राउंड वाटर सैंपल जो सर वो भी कोर्स वर्क के बाद ही काम शुरू करना है, तो आई थॉट आई आस्क यू वंस, तो उस हिसाब से मैं उसी डायरेक्शन में सर काम शुरू करूँ. आप एक काम करिए, जो आप देखिए आपका फोकस क्या है कि आप देखना क्या चाहते हैं कि वाटर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ हैवी मेटल कंसंट्रेशन इन द ग्राउंड वाटर. तो आप इसके लिए एक सिलेक्ट क्या करिए, सिलेक्ट योर मतलब जो सिलेक्टेड एलिमेंट्स लीजिए. डोंट गो फॉर द एंटायर जियोकेमिस्ट्री का करने का कोई फायदा नहीं है. आप ये देखिए लिटरेचर को सर्वे करिए और आप देखिएगा कि आपका जो कैचमेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली कैचमेंट से ग्राउंड वाटर में कंटामिनेशन करेगा वो. तो उस कैचमेंट की रॉक टाइप क्या है और उससे कौन कौन से एलिमेंट्स ड्राइव होके आएंगे. एंड आई विल सजेस्ट टू गो फॉर द आईसीपीएमएस. आप बीएसआईपी से काम अभी डॉक्टर गौरव जी से आप बात करिए, ठक्कर सर से बात करके, वी हैव द मशीन. तो आपको मतलब है कि एंड डोंट उसको सैंपल कलेक्शन भी आपका ऐसा होना चाहिए कि ग्रिड वाइज सैंपल कलेक्ट करिए. डोंट रैंडमली सैंपल मत कलेक्ट करिए कि यहाँ से 20 सैंपल ले लिया. बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है. आप अपने एरिया को डिमार्केट करके ग्रिड वाइज सैंपल एंड जहाँ पे लिथोलॉजिकल वेरिएशंस हो, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कंट्रास्टिंग डेटा मिलेगा और आपको यहाँ से आप बीएसआईपी कर लीजिए आईसीपीएमएस से. राइट सर. सिलेक्ट करिए, ऐसा कर लिए आप ले लीजिए, कोवर्ट ले लीजिए आप. ठीक है. और जो हैवी मेटल्स हैं आप प्रोडक्ट टेबल से निकाल के आप हैवी मेटल ले लीजिए, 7-8 ले लीजिए, बहुत है आई थिंक. एंड उसमें से लीजिए जो आपको, क्योंकि ग्राउंड वाटर कोई आप लोग पीते हैं, है ना, वो यूज किया जाता है. तो कुछ हेल्थ जैसे आर्सेनिक हो गया एंड लेड हो गया, उसको भी कर लीजिए, वो भी मिल जाएगा. ओके सर. तो आप दोनों चीजें कर सकते हैं कि अरावली से जो भी वेदर्ड होके जो एलिमेंट मतलब जा रहे हैं ग्राउंड वाटर, वो क्या कंटामिनेट करता है. एंड उसके साथ साथ में क्या हो जाएगा, आपका हेल्थ का पैरामीटर भी ऐड हो जाएगा. तो क्वालिटी असेसमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना, एंड इट्स इम्प्लीकेशन करके ऐसे आप कुछ बढ़िया कर सकते हैं. बिल्कुल सर, बिल्कुल. ओके सर, थैंक यू सो मच. स्ट्रेटेजिकली सैंपल कलेक्ट करिए, मतलब सैंपल जब भी कलेक्शन करिए तो आपके साथ जो भी एसोसिएटेड जो काम करा रहे हैं उनसे बिल्कुल बढ़िया से करिए. ग्रिड वाइज सैंपल कलेक्ट करेंगे तो आप बढ़िया से बता पाएंगे. हमने ऐसा तो नहीं कोई पूछेगा कि आपको सैंपल क्यों ले लिया यहाँ से, आपका कोई पर्पस होगा यहीं से सैंपल क्यों लिया. बराबर सर. और एक ग्राउंड वाटर में जो आपके जो
इंडियन मार्क का जो हैंडपंप होता है ना, हाँ तो हाँ उसके कुछ सैंपल आप अलग ले लीजिए, कुछ आपके पास ऐसे बेल होते हैं ना जो नेचुरल बेल होते ओपन थे, में, वो ले हाँ हाँ लीजिए, हाँ। और कुछ सैंपल ऐसे ले लीजिए जो लेके या ऐसे सैंपल होंगे, तो उनको आप ओके अलग सर, अलग कैटेगराइज कर लेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। राइट सर, राइट। मैं सर ये सब चीज़ों का ध्यान रखूंगा सर। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। हेलो, हाँ, और कोई भी? हेलो डॉक्टर गौरव। जी सर बोलिए। हाँ, और मतलब कोई भी है, और कोई भी नहीं बोल। सर। जय सर, यू वांट टू आस्क समथिंग? नो नो, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा तरफ से ओवर आप थोड़ा सा कन्वर्सेट कर लें, बच्चों का जो भी टॉपिक क्या है, उनसे क्या रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करना चाहिए, एंड हाउ बीएसआईपी कैन बेनिफिट इट। राइट सर। सर वो मैं करके एक बार जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से भी एक बार सर आई हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटली दे आर रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम? सर एज ऑफ साइंस फैकल्टी और टोटल इन कच्छ यूनिवर्सिटी। Because in the science faculty, like if anybody is from the computer department या computer राइट। science, so हाँ definitely उनके लिए तो ये ठीक नहीं, मतलब उनके लिए कुछ बेनिफिशियल नहीं होगा। सर, एंड अगर जियो साइंसेस को अगर पर्टेन करके अगर बात करें तो डिपार्टमेंट में सर 8 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड। 20 8 सर। 8 स्टूडेंट्स, ओके ओके। यस। आई थिंक उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा जो जियो साइंस वाले होंगे। यस सर। यस। वो मतलब अपना पूछ सकते हैं कि, और यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि अभी बीएसआईपी में रिसेंटली हम लोगों ने भी किया, और अभी हम लोगों ने एक दो मशीन और भी लिया, क्योंकि बीएसआईपी पीपल आर वर्किंग फ्रॉम प्री कैंपेन to the recent one, and राइट। in the recent one we have the DNA fingerprintings also. हम्म। So whatever you want, like my one PhD student, he is working the paleo dietary habits in the last 3,000 years before present. So राखीगढ़ी जो सभ्यता थी वो कैसे, उसका paleo diet उन्होंने कैसे चेंज किया, we are working on the ancient human bones पे, उस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। like ancient human bones, lake sequence, fluvial sequence, कहीं पे भी आप काम कर सकते हैं। n number of opportunities for the in the science field. And not only that, you can come to learn the principles, like recently 37 students, they came for the dissertation from the chemistry to only just learn the basic principles of the any machine, because this is also very important part, how machine works. राइट सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेटिव लेक्चर सर। जो भी स्टूडेंट्स है जो जियो साइंसेस से पर्टेन कर रहा है, आई होप दे हैव गेन्ड इनफ नॉलेज एंड हैड अ वेरी गुड कोई डिस्कशन भी अबाउट। भाई, मेरा मेल फ्री है, एंड फोन नंबर भी गौरव पास है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी है, तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का मतलब जो पीएचडी करने आए हैं उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, एंड सर्टेन मतलब राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन में जाए तो बहुत अच्छा रहता है। राइट सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर आपका अगर परमिशन हो तो मैं मीटिंग एंड करना चाहूंगा। ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इसके बाद का जो सेकंड लेक्चर है वो 12 बजे से है, तो अभी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर जैसा है, तो वील कीप दिस मीटिंग ऑन, और यही मीटिंग में हम जो 12 बजे वाला सेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। तो सर हम अभी लीव कर सकते हैं, उस टाइम वापस से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, आपका मर्जी, ऐसा हमारे यहाँ से तो मीटिंग चालू है, पूरा रिकॉर्डिंग ओके कोई बात नहीं। ओके सर।
Dr. Nilesh Thakur. जी जी सर। सर आपका सेशन एक्चुअली जो शीतल मैम ने लिंक भेजा है उस पे चल रहा है, ये सर साइंस वाला सेशन चल रहा है। ओके, सो सॉरी सर, सो नो सॉरी। वरीज।
Hello. हाँ सर, गुड मॉर्निंग. Good morning, dear students. સર અવાજ આવે છે અમારો? અવાજ આવે છે? બધાને આવે છે? વિવેક છે, હા સર. છે. કારણ હા કે સર, હું આવે છે. અત્યારે આવે છે સર અવાજ. yes, good. Nice, good. કે અત્યારે કોલેજમાં પાવર ફેલિયર So students are મારે resource person બીજા for લોગિન પરથી જ પ્રેઝન્ટેશન students are resource person for today's Dr. Darshit Padia. He is assistant professor in geology at R.R. Lalan College. सर का बेसिक वर्क है इक्नोलॉजी पे, फॉसिल के ऊपर है, माइक्रो पैलेंटोलॉजी के ऊपर है, सेडिमेंटोलॉजी के ऊपर है. सर का बेसिक वर्क किए हैं. तो सर विल बी गिविंग द टॉक ऑन डूस एंड डोंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च. सो ओवर टू यू सर. Thank you, Ishan. This is the second time you all will be listening me. Okay, friends. So आज का जो टॉपिक है that will be very interactive. So मैं पहले ही पूछना चाहता हूँ कि which language will be comfortable, English या हिंदी? I don't think Gujarati will be more convenient because now we are pursuing the Ph.D. So national language might be easy to absorb. तो मैं फ्रेंड्स आप ही को पूछना चाहता हूँ कि कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा इजी रहेगा? So very less reply. Okay, so I will Sir, be English using will be the comfortable mixed for, approach, India, that we is can use Hindi. bilingual. Yeah, Hindi. Sure. Okay, so is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, nice. चलो at least कुछ तो रिस्पॉन्स आया. Okay, yes friend. So आज का जो टॉपिक है that is do's and don'ts. So फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक आया कहाँ से, क्यों ये टॉपिक लिया गया है, क्यों ये टॉपिक चूज किया गया है? द रीजन इज हमने जब हमारा साइंटिफिक जर्नी, द रिसर्च साइंटिफिक जर्नी हमने जब हमारा कंप्लीट किया, वी केम अक्रॉस मेनी ऑफ द डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट इश्यूज. उसको कैसा हैंडल किया जाता है, क्या क्या गलती हमने की थी जो आप रिपीट ना करें, ठीक है? तो उसके बारे में ये डूज एंड डोंट है. So this is a very important lecture in that particular sense. हमने जो मुश्किलें झेली है, या तो हमने जो एक्चुअल इश्यूज फेस किए हैं वो हमें पता चला एट द टाइम ऑफ राइटिंग द थीसिस. अरे अगर ये चीज पहले हमने कर ली होती तो थीसिस के टाइम पे इट वुड बी वेरी स्मूथ. लेकिन कुछ चीजें छूट गई थी जो थीसिस राइटिंग के टाइम सामने आई. सो That's why I choose these things, do's and don'ts of the scientific research. क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. Okay, so let us start the lecture with what is research. We all know research क्या होता है. The term itself means research. We have to search something which is already existing. ऐसा नहीं है कि हम कुछ नई चीज लेके आ रहे हैं. Okay, you are doing something new but in a different way. That is also a research. Okay, so let's go to the definition. So it is a systematic investigation. पहला ही टर्म बहुत अच्छा से लिखा है. जब भी मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ कि भाई सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, जब भी डेफिनेशन आती है ना, ईच एंड एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग. अगर उसमें एक भी वर्ड छूट जाता है ना, दैट मीन्स दैट डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट. सो यहाँ पर जितना भी वर्डिंग्स यूज किया गया है डेफिनेशन में, ईच एंड एवरी इज कैरिंग अ परफेक्ट मीनिंग विच शुड बी obeyed while discussing, while writing the research. So first and foremost word is systematic investigation. Investigation तो सभी लोग करते हैं, but if you don't do it in a systematic manner, that performing.
So research systematic of material and source to establish and reach new conclusion. So जो भी मटेरियल और सोर्सेज उसके बारे में नई फैक्ट्स निकालिए और एक नया कंक्लूजन आप आइडेंटिफाई करें रिसर्च और इन डिफरेंट वे of systematic procedures. So it's followed by Sir, you are not clearly audible. I'm not clear audible. My sound is Yes, sir. Clear અવાજ નથી આવતો. I think so that will be the issue of the internet because of the power connection. Is the problem for all the students or for the few? Now you are audible, sir. No, sir. Okay. You are not clear. Okay, I will go slowly. Okay. So जो दूसरा जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं उसके हर एक एस्पेक्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है सिस्टमेटिकली you have to follow the procedure. That means your methodology should be very systematic. And ultimately, आपने जो problem लिया है, उसको solve करना is your final goal of your research. Okay, am I clear about the definition? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, as I already discussed, why do and don't? तो भाई हमने जो जो चीजें फेस की है या आप लोग इन फ्यूचर फेस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे. कुछ चीजें आपने ऑलरेडी फेस की होगी इन द इनिशियल स्टेजेस, तो उसी को लेके एक पूरा अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाया है कि भाई क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है और क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है. सो वी विल बी डिस्कसिंग डूज एंड डोंट फॉर लिटरेचर रिव्यू. क्या चीजें ठीक है क्या नहीं है. Same goes for the methodology. Same goes for the data collection. Same goes for the data processing and interpretation, research paper writing, and finally the thesis writing. So this PPT will be very helpful. It will provide you the key points. So let us start with the literature review. Okay, friends. So ये टर्म आपने बहुत बार सुना है, लिटरेचर रिव्यू लिटरेचर रिव्यू लिटरेचर रिव्यू. चलो, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू? क्या होता है लिटरेचर रिव्यू? क्या होता है? Am I audible? Literature review is nothing but the previously what has been done in that particular research earlier by researchers. That is before literature review. Very good. So And some lacuna in that particular research we have to look into, and that we try to sort out in our research. very good, very good. That will be Yeah. written. परफेक्ट परफेक्ट. लेकिन क्या ये सिस्टमेटिक होना चाहिए या इट शुड नॉट बी सिस्टमेटिक? क्या क्या लगता है आपको कि इसका कोई प्रोसीजर होगा कि कुछ नहीं होगा, जैसा ही हमें अच्छा लगे कि चलो ये थोड़ा सा अच्छा कैची एक रिसर्च पेपर है, लेट मी रीड, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ये रिसर्च आर्टिकल पढ़ना नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है लिटरेचर रिव्यू में कि आपको जो अच्छा लगा यू विल ऐड, आपको जो अच्छा नहीं लगे यू कांट ऐड, ऐसा हो सकता है इसमें? No, sir. It should be the recent articles or the thesis, not more. बहुत पुरानी चीजों को रिफर करके सर कुछ फायदा नहीं होगा. ओके, वेरी गुड, नाइस. चलो, कुछ तो पढ़ा किया है आप लोगों ने. ओके, सो लिटरेचर रिव्यू इज अ वेरी सिस्टमेटिक प्रोसेस. So first of all, read about your topic from various sources. और let me suggest you, जैसे डॉक्टर गौरव चौहान आपने बताया था कि everybody should use Google Scholar. You have to just write down the research topic on what you are working. Google Scholar में आप उसको डालिए और सर्च बटन पे हिट करिए
and you will find various research paper regarding your particular topic. Second thing is Shodh Ganga. Have you heard about the Shodh Ganga? Yes, sir. हाँ, तो वहां से आपको रिसर्च पेपर मिलेगा या थीसिस मिलेगा? Thesis. Thesis. ओके, तो फिर लिटरेचर रिव्यू पेपर पढ़ना अच्छा या दोनों अच्छा है? सर फरीથી એકવાર क्या બોલો फायदा ને होगा अगर आप या ओके ओके સર વોઇસ બરોબર નથી अगर આવતો નેટવર્ક ના લીધે yeah okay I we just got the power backup, so it will take 1 or 2 minutes to restore the power failure. Okay, just a minute. I will reshare the slide, just a minute. Okay, friends, so I got the power now. Okay, so am I audible and my Yes, sir. screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now you are clearly audible So and now- your screen is also visible. Okay, nice, thank you. Yeah. So friends, थीसिस पढ़ना ज्यादा फायदा कारक है या फिर रिसर्च पेपर? For the literature review purpose, I'm talking about literature review purpose. What are your views? क्योंकि सी हमने तो कुछ कुछ गलती की थी जिससे हमने सीखा है. So what do you think? Reading this thesis is more beneficial या research paper? Sir, I guess both are beneficial. Okay, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, I'm again repeating, कि क्या ज्यादा beneficial रहेगा? Sir, research paper. Research paper. Okay, research paper क्या आपका पूरा टॉपिक कवर करता है? Sir, thesis. क्यों Because thesis, क्यों research paper? yeah, because we can identify what the way Very good. we do the literature review, the proper way we can get by Exactly. thesis. एग्जैक्टली पेपर जो रहता है ना उसमें लिमिटेड लिटरेचर रिव्यू रहता है दैट इज इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. यू वोंट फाइंड द मैसिव लिटरेचर रिव्यू इन द रिसर्च पेपर, बट व्हेनेवर यू आर रेफरिंग द थीसिस, आप लिटरेचर रिव्यू के अलावा थीसिस का जो फॉर्मेशन है, थीसिस का जो आउटलाइन है वो भी आप मालूम कर सकते हैं, और साथ साथ में द मैथोडोलॉजी दे हैव यूज्ड can also be understand. ठीक है, research paper is very good for review, but if you are writing the research paper review, not the thesis review. thesis review जब आप thesis लिखेंगे तब जब आप literature review लिखेंगे, it will be a massive task which includes many of the things. So वहां पर आपको ज्यादा thesis पढ़नी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी because it includes many of the things. So that's why I'm putting these do's and the don'ts. So have the basic understanding कि भाई previous जो भी findings हुई है क्या क्या हुई है. Form an outline कि भाई यहाँ तक डेवलपमेंट है, यहाँ XYZ लिमिट तक स्टडी हो चुकी है. डेवलप एन कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, एनालाइज इट, एक ड्राफ्ट बनाइए. वो ड्राफ्ट बनाने के बाद आपका लिटरेचर रिव्यू खत्म नहीं होता है, उसके बाद यू हैव टू एक्सपांड दैट ड्राफ्ट बाय डूइंग मोर एक्सटेंसिव स्टडीज, एंड देन
the final draft will be created and your literature will be finished. So friends, the do's and don'ts during the literature reviews are, whenever you are doing the literature review, link every statement or opinion to a source. क्यों? क्योंकि आप existing रिसर्च को यहां पर डिस्प्ले कर रहे हैं, ना कि आपका खुद का रिसर्च यहां पर डिस्प्ले कर रहे हैं. सो डोंट स्टेट योर ओन ओपिनियन इन लिटरेचर रिव्यू. कई बार ये गलती हो जाती है, हम कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा वी जस्ट कैरीड अवे विद आवर राइटिंग, और फिर हम हमारा कंक्लूजन भी उस पर लिखना शुरू कर देते हैं. सो डोंट डू दिस मिस्टेक्स. सो literature review means you are understanding what is already being existing. Okay. Second, don't write random statements or paragraph जिसका आपके टॉपिक के साथ कोई मीनिंग नहीं है. For the sake of having more pages in your thesis, 300 पेजेस का थीसिस देखो, डबल की बनाया है, मेरे को इसने बच्चे ने कितनी पढ़ाई की होगी, लेकिन दैट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स या तो पैराग्राफ आपके टॉपिक के साथ कहीं पर भी रिलेटेड नहीं है, तो डोंट राइट इट. स्टार्ट एवरीथिंग विद द इंट्रोडक्शन. चाहे आप कोई सा भी चैप्टर उठाइए, have a paragraph on the introduction in your voice. Your voice means in your language. ठीक है. Don't jump direct to the conclusion without introduction. ये गलती भी आपको नहीं करनी है. ठीक है, आपने पहले लाइन में लिख दिया these are my finding. नहीं, अगर आप कंक्लूजन भी लिख रहे हैं, अगर आप मेथोडोलॉजी लिख रहे हैं, have a short paragraph on the introduction, what sort of methodology you have used, and then come to that particular judgment. Do's, exhibit that you are learning by reading the literature. आपका जो फ्लो होना चाहिए लिटरेचर रिव्यू के टाइम पे, वो ऐसा होना चाहिए कि यस, यू आर स्लोली बीइंग लर्न बाय वॉट एवर यू हैव रिटन इन योर पर्टिकुलर thesis. Do not write or copy paste content just for sake of it. यहाँ से डायरेक्टली उठा के सीधा ही कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अदरवाइज इट विल बी द पार्ट ऑफ द प्लेजियरिज्म और आपको उस थीसिस को रीराइट करना पड़ेगा. एथिकली दैट इज रॉन्ग. सो ऑलवेज राइट इन योर वर्ड. एंश्योर, जस्ट अ मिनट. Sorry for the interruption. I was getting continuous call from one number. Okay. So now, yeah, ensure each section content with your research aim and objective. Don't write random statement without logic or purpose. कई बार हमने, क्योंकि मैंने भी लास्ट टाइम 2 thesis रिव्यू की थी, तो आई हैव टू मॉडिफाई दोस थिंग्स कि भाई जो चीजें आपके परव्यू में नहीं आ रही है आपके रिसर्च में, आप सिर्फ पेज ज्यादा भरने के लिए उसको क्यों लिखते हैं? इट इज नॉट बीन रिक्वायर्ड. आई हैव सीन वन थीसिस. चाम्याल सर ऑलवेज टॉक्ड अबाउट द थीसिस. एमएस यूनिवर्सिटी में एक थीसिस आया था बिल्कुल छोटा, और उसमें वो जो बंदा था उसने जो रिसर्च पेपर डाला था, जैसे सर ने लास्ट टाइम बताया था कि he has published 2 papers and both the paper were in the nature. So 32 या 40 पेज में the whole thesis was completed. It was direct, very precise. So be precise in your writing. Explain all the diagrams and table. कई बार ये गलती हो जाती है कि हम डायग्राम तो लिख देते हैं, लेकिन उसको इंटरप्रेट या तो उसके ऊपर हम पैराग्राफ लिखना भूल जाते हैं. सो डोंट लीव योर रीडर ट्राइंग टू इंटरप्रेट व्हाट your diagram or the table is indicating. The last point is very important. Read again for any needed correction. ये भी बहुत बार होगा कि यार मैं एक वक्त तो लख्યું છે, मारे શું કામ વાંચવાનું, मैंने एक बार तो लिखा है, मैंने लिखा, मैं क्यों पढ़ूं? But if you read it twice, definitely you will come across many of the things which were not necessary, or there will be some spelling mistakes, some grammatical mistakes. So always
read twice, thrice, as many as time possible, and don't forget at the last for the proofreading. Repetitive reading can make all the difference. I'm sure that these things will definitely help you writing your literature review. Now, the second point, what I will be covering is do's and don'ts in methodology. Now, friend, what is methodology? कि भाई हम जो भी मेथड यूज कर रहे हैं, चाहे वो डेटा कलेक्शन के लिए हो, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए हो, ठीक है, वी हैव सम सॉर्ट ऑफ मेथोडोलॉजीज और वो मेथोडोलॉजी ऐसी होती है कि कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती है, कुछ आप नई Sir, again your voice is interrupted. आता है या तो उसके ऊपर चल रहा है, उसका कोई ना कोई इम्प्रिंट वहां पर छूट जाता है, एनी बिहेवियरल पैटर्न वहां पर छूट जाती है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है. सो नाउ on hard rock it was very easy to identify, but when it comes to the soft rocks it was very difficult for us to identify कि भाई हम इस स्ट्रेस प्रोसेस को आइडेंटिफाई कैसे करें. It took us around 1.5 years. समझिए दोस्तों, 1 से 1.5 साल लगा था हमें इस मेथड को फाइनलाइज करने के लिए. So you may develop a very innovative method also, and you can follow already existing method also. So always talk with your supervisor कि भाई हम ये मेथड फॉलो कर रहे हैं, ये मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, मैं अगर मेरी जो मेरा एक्सपीरियंस है अगर मैं बात करूं तो कि इफ आई एम हैविंग अ सैंड, मेरे पास एक रेत का पूरा बॉक्स भरा हुआ है, ठीक है, और अगर मैं उसमें बरो बनाता हूं और उसके बाद मैं उसके अंदर चॉक पाउडर ऐड कर देता हूं. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एडिंग अ चॉक पाउडर इन अ बरो इन अ होल which is covered by the sand. So what will happen, the chalk powder will definitely show you the difference when you cut the section. So by cutting the section we come across the stress forces, we identify the width, the size of the burrow. So definitely what we did the scrapping method. We developed that method कि slowly we will scrap the surface and we will try to identify the how the burrow is moving. So friends, you can always develop the method while in the field. So what are the do's? Ask your supervisor what method suits you, suits your research. Clearly define your methods. Unreliable method produce unreliable results. फाइनली क्या होगा, जो भी आपका एंटायर रिसर्च आउटकम है वो आपका गलत हो जाएगा या तो उस पर एडवर्स इफेक्ट आएगी. सो पहले से ही आप अपनी मेथोडोलॉजी है जो सेट कर लीजिए. दूसरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी मेथड यूज कर रहे हैं उस मेथड की लिमिटेशंस होती है. सो ऑलवेज आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ द रिसर्च मेथड और उसकी जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है उसको कभी भी आप एग्जागरेट मत करिए. Okay, now let me ask few questions. So, आप में से कोई वैसे this is a very initiative stage of your research, लेकिन आप में से how many of you are having the field studies, the subject which will have much of the field? I am not able to see the hands because of the screen issues, but I suggest कि friends, yeah. हेलो. यस सर. हाँ जी, बोलिए किस पे काम कर रहे हैं और आपका क्या टॉपिक है? सर मेरा बॉटनी सब्जेक्ट है और सर मेरा टेक्सोनॉमी वर्क ज्यादा है. वेरी गुड. तो आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, क्या यूज करेंगे आप? ये सर अभी मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ अभी. ओके, सो आप कभी फील्ड में गए अभी आफ्टर यू स्टार्टेड योर रिसर्च वर्क? यस सर. ओके, तो आपने कुछ तो ऑब्जर्वेशन किया होगा ना कि भाई इफ आई वांट टू कलेक्ट द सैंपल, फॉर एग्जांपल प्लांट स्पीसीज,
Yes, sir. तो कैसे कलेक्ट करेंगे? कुछ तो आपने ऑब्जर्व किया, कुछ आपने रीड किया होगा. कैन यू yes. से फ्यू वर्ड्स? सर जैसे मेरा सर मोस्टली टेक्नोमिक वर्क है और साथ साथ में इकोलॉजी का भी है, तो मैं मोस्टली जो ये अपना सैम्पलिंग है, Yes. सैम्पलिंग. Very good. I will most probably go with that. Very good. So friends, यही मैं सुनना चाहता था. See, quadrant sampling. So friend, he has already said some of the methodology कि भाई मैं quadrant sample लेने वाला हूँ, मतलब कि area by area, for example 1 feet by 1 feet, 1 meter by 1 meter, 500 meter by 500, whatever quadrant he set, he will going to count number of species associated with that quadrant. Am I right? Exactly, sir. Yeah, see friends. So अगर आपका methodology पहले से set है, तो understand the limitations and the exaggeration of that methodology. So friends, be sure about the methodology, what you are going to use. Ask your supervisor and don't compromise with those existing methodology, what we are going to use in the fields. Now, very important do's and don't in the data collections. यहाँ पर बहुत सारी गलती होती है, हमने भी की है और हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा भी है. कुछ एग्जांपल्स तो मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा एरिया जो था that was the run, how the run get evolved in the late Holocene, that means last few thousands of years. So I was working in a very remote area, and in my first field, I forgot to charge my camera. Seriously, this has happened. फील्ड में तो चले भी गए, मुझे दिमाग में यही था कि अरे कैमरा तो चार्ज ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट when we reached that spot, when we started taking the clicks, then I realized after 3-4 clicks the error blink, your data, your battery is dying very quickly. देखो ये होता है. So always make checklist कि before going to the field क्या क्या चीजें आपको साथ में ले जानी है. Don't forget to do this friends, because this will save lots of energy and lots of time. ये चीज आप 100% जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी लैब में काम कर रहे हैं, वो फेस करेंगे, गारंटीड इट. डू चेक योर इक्विपमेंट्स डबल ट्रिपल टाइम. चाहे आपका टीममेट बोले कि अरे हमड़ा तो चेक करू, तू क्यों कर रहा है, नहीं, ट्राई टू चेक इट, बिकॉज इफ इट गिव्स एरर व्हेन यू एक्चुअली रीच योर स्पॉट, यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू. ये भी हमारे साथ हुआ है. ठीक है. Last time, me, Dr. Gaurav और हमारी team, again we went to the Vigakot, which is almost 180 kilometers from the Bhuj. It took us 4 hours to reach that spot. That spots come under the BSF area, so we have to take the permission. वहाँ पर हमें 1 मीटर या 1.5 मीटर का एक बड़ा सा एक पिट ओपन करना था, उसको डिग करना था. So we have all the equipment, shovel था, जो हमें डिगिंग इक्विपमेंट थे. अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ही खुदाई करने के बाद द शोवेल का जो हैंडल था वो टूट गया. एंड अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी बैकअप ऑफ दैट शोवेल. इमेजिन फ्रेंड्स, 4 घंटे बाद आप वहां पहुंच रहे हैं, और when you are actually collecting the samples, because I have to collect the sediment samples, I have to sieve it. वहां पहुंचने के बाद अगर वो इक्विपमेंट आपका जो ज्यादा वैल्यूएबल भी नहीं है, 200 रुपए का इक्विपमेंट था, बट वो 200 रुपए का इक्विपमेंट की वैल्यू क्या थी वो हमें वहां फील्ड में पहुंचने के बाद पता चली. सो ऑन द सेम इवनिंग व्हेन वी रीच द भुज, आई बॉट 2 एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ दोस इक्विपमेंट. और जब भी मैं उसके बाद जितनी बार भी फील्ड में गया, मैं हमेशा बैकअप के साथ फील्ड में गया हूं. सो फ्रेंड्स, always check your equipments, and if you have a backup, always carry the backup with you. थोड़ी बार आपको लगेगा कि चलो वेट थोड़ा बढ़ रहा है, बट आपका काम रुकेगा नहीं. बी एक्सट्रीमली विजिलेंट. यहां पर भी गलती हो जाती है.
मैंने भी की है और बहुत सारे जो रिसर्च स्टूडेंट्स इन स्टेज में करते हैं. Try to record all the data when you are in the field. Try to record all the data. That means आपने फील्ड में कौन सी मैथडोलॉजी यूज की है वो भी आपको रिकॉर्ड करना है. डोंट ओनली रिकॉर्ड द कलेक्शन सैंपल्स कि चलो मैंने सैंपल कलेक्ट कर लिया, ओके दैट इज फाइन. लेकिन एज द विवेक टोल्ड, इफ ही इज यूजिंग द कोड रेट और इफ द दीप इज यूजिंग द कोड रेट, तो कोड रेट के साथ भी आपका एक फोटो होना चाहिए. That will be very important photograph for your methodology. That will prove your methodology that you have used the portrait sampling. आपने नो डाउट स्पीसीज कलेक्ट कर लिए, आपने स्पीसीज के बहुत सारे फोटोग्राफ ले लिए, लेकिन आपने स्पीसीज कैसे काउंट की? फॉर एग्जांपल, यू आर टेलिंग इन योर, यू आर राइटिंग इन योर थीसिस, यू आर राइटिंग इन योर रिसर्च पेपर दैट द डेंसिटी ऑफ माय बोरोज आर 10 पर कोड रेट, लेकिन कोड रेट का एक भी फोटोग्राफ आपके पास नहीं है. Then the research, the referee or the reviewer will ask the question, code rate कहाँ है भाई, फोटो कहाँ है? What is the proof you have taken the code rate? So friends, be extremely vigilant, क्योंकि बार बार फील्ड में जाना हर टाइम के लिए पॉसिबल होता नहीं है. It's a waste of money as well as waste of energy and waste of time. So be extremely vigilant. Record all the data when you are in the field. ऐसा नहीं है कि चलो मैं थोड़ा घर पे आ जाता हूँ बाद में लिख लूंगा या लैब में जाऊंगा तब लिख लूंगा. ठीक है, ऐसा नहीं करना है. सेकंड थिंग, टेक वेराइटीज ऑफ फील्ड फोटोज. यहां पर भी मैंने गलती की थी एंड मुझे दूसरी बार फील्ड करनी पड़ी ओनली फॉर द फोटोग्राफ्स. सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू हैव मैक्सिमम फील्ड फोटोग्राफ्स, as many as possible. Very important things, interact with your research team. आप देखो अकेले नहीं गए हैं फील्ड में, जब आप जा रहे हैं आपके साथ आपके टीममेट्स हैं, सुपरवाइजर है. इंटरेक्ट द थिंग्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शंस आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड हैव द एडेड बेनिफिट. बहुत सारी चीजें आपकी इंटरेक्शन से वहीं पर आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे. हो सकता है आपका हाइपोथेसिस भी बन जाएगा, हो सकता है आपका हाइपोथेसिस प्रूव भी हो जाएगा. सो always interact with your team whenever you find something new or you are not finding something new. On both the ways, interaction will be very, very helpful. Now there are some don'ts also, the mistake we should not do. So when working with a team, be sure that everyone is aware of the field plan. आपके साथ जो भी टीममेट्स आ रहे हैं उनको आज के फील्ड प्लान के बारे में पता होना चाहिए कि भाई वी आर गोइंग टू ट्रैवर्स फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन और यहाँ से हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे. सो व्हाट विल हैपन इफ पहले ही सेक्शन पे आपको बहुत अच्छा डेटा मिल जाता है एंड यू ऑलमोस्ट स्पेंड मोर 2 hours एट दैट पर्टिकुलर स्पॉट. व्हाट विल हैपन, आप ऑलरेडी दूसरे स्पॉट के 2 घंटे गवा चुके हैं. तो इफ यू आर हैविंग if you have briefed your team members, what will happen, your team member can diversify और वो दूसरे लोकेशन पे, because he or she has learned what type of data is being collected. तो सेकंड स्पॉट पे और थर्ड स्पॉट पे पैरेलली आपका काम जो है वो शुरू हो जाएगा. दिस विल नॉट सेव the energy, it will also save the time as well as money you are investing during the field. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो होता ही होता है और ये आपके साथ भी होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कम से कम हो. डोंट रिलाई ऑन योर मेमोरी और टेल योरसेल्फ यू विल राइट इट डाउन लेटर. मैंने जितनी बार भी भवानी सर के साथ फील्ड की, आई ऑब्जर्व भवानी सर, ही ऑलवेज यूज्ड टू राइट, ही ऑलवेज यूज्ड टू सिट एट पर्टिकुलर स्पॉट फॉर हाफ एन आवर. सर के पास हमेशा एक डायरी रहती थी और आधा पौना घंटा सर वहीं पर बैठते थे एंड ही यूज्ड टू राइट एवरीथिंग व्हाट ही हैज ऑब्जर्व्ड एंड ऑन दैट पर्टिकुलर स्पॉट इटसेल्फ. सो हम भी वहीं पर सीखे. आई यूज्ड टू डू माय फील्ड विद सुरुचि एंड शी वाज डूइंग एक्सीलेंट वर्क इन प्रिपेयरिंग द फील्ड नोट्स. उनके अगर आप सुरुचि पटेल के अगर आप थीसिस भी देखते हैं, she has also put the photographs of the field
डायरीज, बढ़िया सा पूरा का पूरा नरेशंस, जितने भी साइट सर्वे किए हमने, ठीक है, एवरीथिंग वाज रिटन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर स्पॉट और एट दैट पर्टिकुलर स्पॉट. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ ઘણી વખત તમારી જોડે બી થશે, अरे मैं फोटो तो पाड़ी लीधा है ना, मैंने फोटोग्राफ ले लिया है, अब क्या करूंगा, जो भी चीजें हैं वो मैं घर पे जाके बाद में लिख लूंगा. लेकिन व्हेन यू रीच होम, ठीक है, मेमोरी फेड्स वेरी क्विकली वंस यू आर बैक इन द लैब और एट द होम, और आप भूल जाएंगे कि अरे आपने क्या थियरी बनाया था वहां पर, आपने क्या ऑब्जर्व किया था. सो फ्रेंड्स, डोंट डू दिस मिस्टेक्स. सेकंड, ये भी होगा, so don't get discouraged. Sometimes field work doesn't go as you have planned. कई बार आपने प्लान किया होगा कि आज के दिन में मैं 4 साइट्स खत्म कर दूंगा, या तो आज के दिन में मैं इतने सैंपल्स कलेक्ट कर लूंगा, बट समटाइम्स दैट इज नॉट योर डे, और आप अपना काम नहीं खत्म कर सकते हैं. सो डोंट गेट डिस्करेज, ऑलवेज बी पॉजिटिव. ओके, ट्राई टू प्लान systematically one more time and go back to the field and collect whatever is necessary. Don't forget to carry sufficient water if you are working in remote area. ये भी हमारे साथ हुआ था when we were working on the Alaban. 5 students, हम लोग मतलब कि 5 teammates गए थे, and we were carrying almost 40 to 50 liters of the water, and we were working in the summers. During that summer, the temperature was around 49 degree. और दोपहर में 1-2 बजे तक जितना भी पानी हम लोग लगे गए थे पूरा खाली हो गया था, और अनफॉर्चुनेटली हमें काम छोड़ के वापस घर आना पड़ा था. सो वी डिडंट गेट डिस्करेज, वी अगेन स्टार्टेड अवर जर्नी with more water and more food, and again we reach the spot and complete that work on the next day. Second, if you are working in a remote area or in a specific area where you have to take the permissions from the industries or from the BSF or maybe from the police or from the forest, don't forget to take the field permissions, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं और कि आपका पूरा field data waste हो जाए because you have not followed the particular procedure of the field permissions. Okay friends, I think this field work is also clear. क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है, एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आप अपने इक्विपमेंट्स, अपने फोटोग्राफ्स, और जब आप रिसर्च टीम के साथ जा रहे हैं, अगर आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, आई एम डेफिनेटली यू विल स्टार्ट लविंग द फील्ड डेफिनेटली, और साथ साथ में आपका 70% ऑफ द डेटा वर्क, डेटा कलेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, सब कुछ बहुत ही स्मूथली फील्ड में ही खत्म हो जाएगा. नाउ we have to follow certain procedure, do's and don'ts in data processing and interpretation also. चलो फील्ड में से डेटा कलेक्ट करके लैब में तो लेके आ गए, लेकिन अब करना क्या है, अरे भाई वो पहले से ही प्लान हो जाना चाहिए कि भाई मैं क्या डेटा कलेक्ट करूंगा, what quantity of data is required, what quality of data is required, that also should be planned before collecting those data. ये भी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जितने भी जूलॉजी, बायोलॉजी के साथ या तो सॉइल सैंपलिंग के साथ जितने भी स्टूडेंट्स डील कर रहे हैं, अगर वो सीव एनालिसिस के लिए जा रहे हैं या तो सैंपल प्रोसेसिंग के लिए जा रहे हैं, तो देयर इज अ क्वांटिटी रिक्वायर्ड ऑफ दिस सैंड या तो सैंपल, फॉर एग्जांपल 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम. ओके, आप फील्ड में गए, छोटा सा पॉलिथीन बैग लेके गए, आपको चाहिए था 100 ग्राम ऑफ द सैंपल, बट अनफॉर्चुनेटली यू डिडंट कलेक्टेड 100 ग्राम एंड यू कलेक्टेड अराउंड 80 ग्राम. सी योर डेटा, you haven't planned your quantitatively that what quantity of data sample you have to collect it. So don't do these mistakes while collecting the data. Okay, आपको पहले से पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू टेक सो मच ऑफ रीडिंग, सो इतने रीडिंग्स आपके पहले से ही प्लान होने चाहिए. ओके, आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा, प्री प्रोसेसिंग ऑफ द कलेक्टेड डेटा शुड बी डन. Third most important thing is choose appropriate analysis method for collected samples. Fourth, which is very difficult to read, क्योंकि मैंने जानबूझ के येलो फॉन्ट यूज किया है, बिकॉज ये है ही ऐसा पॉइंट
use appropriate visualization technique to represent data interpretation. See, अगर मैं यहाँ पर येलो फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, आपको भी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, मुझे भी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो that means friends, whenever we are representing our graphs, our tables, it should highlight what are my findings. ठीक है, अगर वो आधे अधूरे है या तो मिसलीडिंग है या तो वो इनकम्प्लीट है, तो इट विल हैपन सेम एज व्हाट यू आर रीडिंग राइट नाउ. आपको ये पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा. सो use appropriate visualization techniques in data interpretation methods. Interpret result carefully and avoid making unsupported claims. मैं इसके बारे में भी एक एग्जांपल देना चाहता हूं. आप लोगों ने वेट सीविंग शायद जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो है या तो जियोलॉजी के है, क्योंकि बिकॉज आई एम फ्रॉम द जियोलॉजी बैकग्राउंड, मैं एक एग्जांपल दूंगा. फॉर एग्जांपल, वी आर हैविंग अ सीव. सीव मतलब कि चायणी. આપણે गुजराती में कहे तो चायणी के सीव कि फॉर एग्जांपल 2 mm का सीव है हमारे पास. तो क्या होगा, आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा कि जो लेबर्स होता है वो पूरा धूल मिट्टी सब डालते हैं और उसको सीव करते हैं, उसको शेक करते हैं और सिर्फ धूल ही नीचे आती है, बाकी जो बड़े बड़े कंकर्स होते हैं वो बाहर ऊपर ही रह जाता है. दैट इज द सीविंग. आई होप कि ये चीजें आप लोगों ने देखी होगी. यस और नो फ्रेंड्स? Yes, sir. या ओके. तो इसी के बेस पे मैं एक मिस्टेक बताना चाहता हूं जो मैंने स्पॉट की थी इन वन ऑफ दिस थीसिस. ओके, सो हमने वेट सीविंग किया. वेट सीविंग मतलब कि आपने एक सीव लिया, ठीक है, उसके ऊपर आपने सारा सेडिमेंट डाल दिया और आपने उसको उसके ऊपर पानी पोर करना शुरू किया. तो व्हाट विल हैपन, जो फाइनर मटेरियल है वो उसमें से पास हो जाएगा. जो बड़ा बड़ा मटेरियल है, जो सीव है, जैसे कि गेहूं की सीव है तो गेहूं वहां पर रह जाएगा, बाकी की जो सारी चीजें हैं छोटी छोटी है वो सारी छट जाएगी. जैसे कि इफ यू आर यूजिंग दी बाजरी एंड दी गेहूं, तो बाजरी विल this it will sieve out from that sieve and the only you will find will be the gehu in the sieve. So what will happen, you if you are using two particular things, rye or okay, we can go to power failure, but am I audible right now? Yes, sir. Yes, sir, audible. Okay, is this screen visible because we have lost the internet one more time? Trying to reconnect. Not Sir, your audible. voice is not clear, sir. Just a minute again, for a minute. So now am I audible? Yes, sir, audible, sir. Yeah, okay. So again, so yeah, को पता कि राई है और बाजरी भी है. Saving it, what will be the result? गेहूं जो है आपका वो तो सीव में रह जाएगा, बाजरी और जो Sir, again, it's not clear voice. સર ક્લિયર અવાજ નથી આવતો. Okay. We'll wait for a minute.
हेलो, हेलो, आवाज आवे છે? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ઓકે, ક્લિયર? હા, ક્લિયર છે અવાજ? हाँ. यस सर। Yes, sir. હા, ઓકે, નાઇસ. ઓકે, so this is a very practical example. Okay. So for example हमने 100 ग्राम मिक्सर लिया था इन तीनों का, जिसमें we don't know what was the amount of गेहूं, what was the amount of rye and what was the amount of बाजरी. उतना पता था कि 100 ग्राम तीनों मिलके था. ठीक है, जब हमने सीव किया, गेहूं ऊपर रह गया, मैंने गेहूं को वेट किया तो पता चला कि 70 ग्राम ये था, तो बाकी का 30 ग्राम क्या था? द मिक्सर विच वाज कंसिस्टिंग बोथ राई एंड दी बाजरी. बट मैंने क्या किया? आई डिडंट कंसिडर द लिमिटेशन. मैंने ये बोल दिया कि भाई इनमें से 10 ग्राम राई था और 20 ग्राम बाजरी था, बट दैट वाज द रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज मैंने जैसे ही सीव किया 70% बचा, बाकी का 30% लॉस हो गया. सो बाकी का जो 30 ग्राम लॉस हुआ, दैट आई वाज नॉट श्योर कि कितना बाजरी लॉस हुआ और कितना राई लॉस हुआ. सो ऑलवेज कंसिडर द लिमिटेशन ऑफ द मेथड एंड द इंस्ट्रूमेंट यू आर यूजिंग. I think I am clear in the conveying this particular limitation of the methods and the instrument used. Yes, sir. Yeah, so don't cross the limitation, don't write anything. ठीक है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट लिमिट से बाहर है. So this type of arguments will be nullified और आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा. सेकंड, यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज टू डिस्प्ले योर रिजल्ट. बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है. योर रिजल्ट शुड बी वेरी वेरी कंसाइज एंड वेरी वेरी प्रिसाइज. डोंट रश डेटा एनालिसिस बिकॉज डेटा एनालिसिस ऑलवेज रिक्वायर्ड टाइम्स एंड द पेशेंस. सैंपल प्रिपरेशन में भी टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग में भी टाइम लगेगा. तो चलो मैं एक ही दिन में सब कुछ खत्म कर देता हूँ, ये दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच. डोंट do that things. Don't manipulate data. ये भी आप लोग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसा मत करिए. मैं इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकता हूं. If somebody is working on a sample collection like that, in 1 kilometer I am going to collect 4 samples. So that means at every 250 meter मुझे एक सैंपल कलेक्ट करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर में मुझे 4 सैंपल चाहिए. लेकिन स्टार्टिंग के फेज में तो आप 1 किलोमीटर पे 4 कलेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जैसे जैसे 6 महीना होगा, 1 साल होगा ना, फिर क्या होगा, एक ही किलोमीटर में 4 की जगह 2 सैंपल हो जाएंगे. एट द एंड यू स्टार्ट कलेक्टिंग 1 एंड यू विल स्टार्ट मैनिपुलेटिंग द डेटा. होप आप ऐसा मत करिएगा बिकॉज दिस इज योर रिसर्च. डोंट मैनिपुलेट द डेटा. ठीक है, डोंट इग्नोर इंस्ट्रूमेंट लिमिटेशन. ठीक है, आपका इंस्ट्रूमेंट का थ्रेशोल्ड है कि इससे कम या तो इससे ज्यादा का जो रिजल्ट है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं देख सकता है, तो डोंट पुट योर रिजल्ट विच इज आउट ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. सेकंड, डोंट ड्रॉ अनसपोर्टेड कंक्लूजन. आपको तो लग रहा है कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन इफ यू डोंट हैव एनी एविडेंसेस व्हिच सपोर्ट योर कंक्लूजन, प्लीज डोंट राइट एनी स्टेटमेंट्स जिसका एविडेंस आपके पास नहीं है. नाउ डूज एंड डोंट इन रिसर्च पेपर राइटिंग. ऐसा टॉपिक, ये मतलब रिसर्च टाइटल सिलेक्ट करिए जो कंपेलिंग हो. कंपेलिंग मतलब कि अट्रैक्टिव हो, जिसको पढ़ने में नॉट ओनली द रिसर्च कम्युनिटी बट द एकेडमिक कम्युनिटी को भी मजा आए. ठीक है, कंडक्ट थरो रिसर्च. आप जो भी टॉपिक लिख रहे हैं उसके बारे में पूरा थरली एक बार जान लीजिए. मेक क्लियर स्टेटमेंट इन योर रिसर्च पेपर. रिसर्च पेपर बनाने से पहले ही आपका आउटलाइन नक्की हो जाना चाहिए कि भाई सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, देन आई एम गोइंग टू यूज द स्टडी एरिया, फिर मेथोलॉजी यूज करूंगा, फिर
रिजल्ट आएंगे और फाइनली मैं डिस्कशन और कंक्लूजन तक पहुंचूंगा. सो आउटलाइन योर पेपर इनिशियली, रिलायबल सोर्सेज यूज करिए, proofread and edit whenever it is possible. Don't write false statement. Plagiarization ध्यान में रखिए. जारगाव का मतलब जानते हैं कोई? ओवर यूज ऑफ जारगॉन. So am I audible? मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स? Yes, Yes, sir. sir. હા તો જારગાવનો મતલબ ખ્યાલ છે કોઈને? આ વર્ડ ક્યાંય સાંભળ્યો છો તમે? No, sir. નહીં. ઓકે. સો શું કામ મેં અહીંયા यूज કર્યો છે? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. मायोकार्डियक इन्फ्रैक्शन. ये वर्ड भी आपने नहीं सुना होगा. માયોકાર્ડિયક ઇન્ફ્રેક્શન. બરાબર. કેટલું આમ એવું કોમ્પ્લેક્સ લેંગ્વેજ લાગે છે, કેટલો કોમ્પ્લેક્સ વર્ડ લાગે છે કે આ શું કહેવા માંગે છે. સો इट इज वेरी वेरी साइंटिफिक टर्म जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही समझ सकते हैं. इसका मीनिंग है हार्ट अटैक. अगर उसकी जगह मैं हार्ट लेके लिखूं तो द फुल कम्युनिटी विल अंडरस्टैंड. लेकिन मायोकार्डियक इन्फ्रैक्शन लिखूंगा तो द ओनली डॉक्टर विल अंडरस्टैंड. सो व्हाट विल हैपन इफ यू आर यूजिंग ओवरयूज, बहुत ज्यादा जारगाव वर्ड, मतलब कि ओनली लिमिटेड टू योर डिसिप्लिन वर्ड का अगर आप यूज करेंगे तो क्या होगा? आपका जो पेपर है वो जनरलाइज पब्लिक या तो मल्टी डिसिप्लिनरी जो भी रिसर्चर है या इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चर्स है वो ज्यादा कैची नहीं रहेगा. सो यूज योर जारगाव वर्ड्स इन लिमिटेशंस. डोंट निग्लेक्ट प्रॉपर साइटेशंस. ठीक है? अगर साइटेशंस ठीक से नहीं है, आपका रिसर्च पेपर वापस आएगा. हो सकता है मेजर करेक्शन में आए या तो फिर रिजेक्ट हो जाए. रस राइटिंग कभी भी नहीं लिखना है कि चलो मुझे बहुत कुछ आता है, मैं एक ही दिन में पेपर लिख लूंगा एआई टूल पे. मैं उस पे भी आऊंगा अभी इसके बाद के स्लाइड में. डोंट इग्नोर फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना क्रिटिसिज्म आपको पेपर सबमिशन से पहले मिल जाएगा उतना ही क्लियर आपका पेपर हो जाएगा. क्योंकि जो अभी हमारा रन का पेपर जो एक्सेप्ट हुआ है, that took almost 19 months to get published. 19 months, almost 1 year and 7 months वो रिव्यू में रहा है. It goes in a major review process and it was a wonderful process. हमने बहुत कुछ सीखा उसमें कि भाई क्या क्या चीजें जरूर होती है when you are writing a very thorough scientific paper. Okay. Now do's and don'ts in the thesis writing. This is the last step, last point of our today's presentation. और ये आप सबको लिखना है. It is compulsory for each and every PhD students to write the thesis. So do's. आपका जो thesis है उसका structure आपको finalize करना है. Usually the thesis structure will include introduction, literature review, methodology, result and finally the conclusion. So in हर एक के do's and don't हमने अभी यहाँ पर discuss किए and I hope you all have understood what should be done and what should be avoided during performing this particular task. ये मैंने बहुत सारे जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनमें मैंने ये बहुत अच्छे से देखा है कि दे लिटरली स्टार्ट राइटिंग दिस थीसिस अर्ली. इवन आर्ट्स में भी मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है कि वो लोग अपना थीसिस बहुत ही अर्ली स्टेज में लिखना शुरू कर देते, जबकि मेरी जो कम्युनिटी है उसमें लिखना एंड फिर कहता है कि मुझे बहुत एक साथ स्क्रैच फ्रॉम द
तो कंक्लूजन, इट इज नॉट इजी टास्क। आपको लगा कि मैं 1 महीने में लिख दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। सो एज अर्ली एज पॉसिबल, अगर आपका थोड़ा सा भी मेथोडोलॉजी फाइनल हो रहा है, स्टार्ट राइटिंग द मेथोडोलॉजी, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Vivek has finalized the quadrant sampling. He can always write 2-3 paragraph on what quadrant sampling is, how to perform it in the field with photograph. He can always add more. But एक बार शुरू करेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस पे ये सारी चीजें अभी भी हमारी लेक्यूना है, कम हो रही है. So you will start collecting more and more. So do it on your list. Use precise, clear and accurate language. पे अटेंशन टू एकेडमिक फॉर्मेटिंग. ये बहुत जरूरी है कि भाई आप थीसिस में क्या फॉन्ट होना चाहिए, ठीक है, कहाँ पर इटैलिक फॉन्ट यूज करना है, कहाँ अंडरलाइन क्लियर यूज वॉइस करना है, नहीं आ रहा। एवरीथिंग. यस. Shall I repeat? Yes, sir. Okay. So कहाँ, so what I was telling is start. जैसे कि अगर आपका थोड़ा सा भी लिटरेचर रिव्यू हो गया है, we have started collecting the literature review या तो material, started reading, start writing a paragraph today, एक और paragraph tomorrow, 2-3 paragraph 1-2 दिन बाद. So what will happen, you will enter into the flow और slowly आपके थीसिस के चैप्टर्स जो है वो लिखने शुरू हो जाएंगे. मेरे कहने का मतलब है कि आप पूरा थीसिस लास्ट 1 साल में या 6 महीने में लिखने की ट्राई करेंगे तो इट विल बी ए ह्यूज बर्डन. आप जितना आसानी से समझ रहे हैं कि मैं कर दूंगा, उतना आसानी से आपका थीसिस खत्म नहीं होगा फ्रेंड्स. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. ओके, एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. या. सो दिस डोंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप सभी फाइनली, बिकॉज टाइम कम होता है हमारे पास, बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हमारे पास, ग्रामरली है, बहुत सारे टूल्स है ऐसे, ठीक है, जहां से हम स्पेल चेक करवाएंगे. लेकिन एज वी आर राइटिंग द साइंटिफिक रिसर्च या तो साइंटिफिक थीसिस, बहुत सारी वोकेबुलरी ऐसी आएगी जो डिक्शनरी में नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग राइटिंग सम साइंटिफिक नेम्स फॉर इक्नोलॉजी, अगर मैं मेरी बात करूं, सो ट्रेस फॉसिल्स के नाम मुझे कहीं पर भी एक भी इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं मिले. सो स्पेल चेक मेरा जनरल ग्रामर तो चेक कर लेगा, लेकिन व्हाट अबाउट माय साइंटिफिक राइटिंग? सो फ्रेंड्स, वो आपको मैन्युअली ही करना है. डोंट रिले ऑन द स्पेल चेक कि भाई स्पेल चेक में रन दिया, कोई एरर नहीं है. अरे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो स्पेल चेक उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. एम आई क्लियर? Yes, sir. या. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. सेकंड, हमेशा ह्यूमन प्रूफ रीडर होना चाहिए. ह्यूमन प्रूफ रीडर मतलब अगर आप अपना थीसिस लिख रहे हैं, आपके सुपरवाइजर भी पढ़ेंगे और साथ साथ में गिव योर थीसिस टू योर टीममेट जिसके ऊपर आपको भरोसा हो. तो क्या होगा, व्हेन ही और शी विल रीड इट, तो सॉफ्टवेयर विल पिक अप द थिंग्स, लेकिन सॉफ्टवेयर आप जो लिखना चाह रहे हैं उसके पीछे का जो हार्द या तो मर्म है, मतलब व्हाट यू वांट टू से, वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा, वो ह्यूमन आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है. सो इफ यू हैव एनी इनकंसिस्टेंसी इन योर राइटिंग, कैन बी इजीली बीन पिक्ड अप बाय द ह्यूमन एज कंपेयर टू द सॉफ्टवेयर. सो फ्रेंड्स, माय सजेशन इज, आप जैसा जैसा लिटरेचर रिव्यू शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट राइटिंग few points, then the paragraph, and then the thorough literature review. When you go into the field, start describing methodology, start writing methodology. आपका वो चैप्टर भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है. सो स्टार्ट राइटिंग थीसिस पैरेलली.
ठीक है, उसको आप हमेशा बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ बाद में ही लिखने का सोचेंगे तो एट द लास्ट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. ओके, सो विद दिस आई एंड माय प्रेजेंटेशन हियर एंड होप कि बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हुई होगी कि भाई क्या चीजें हमें करनी है, क्या चीजें हमें नहीं करनी है. सो the it is option sorry, it is now open for the question. The session is open for the questions. Sir, I have a doubt. Yeah. सर जैसे अगर सपोज कोई हम रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं या फिर कोई भी थीसिस लिख रहे हैं तो Okay. सर कोई एक कुछ कुछ थीसिस ऐसी हो सॉरी कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं ना कि जो एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज डिमांड करते हैं. अगर हम वहाँ पे अगर सिंपल लैंग्वेज लिखने जाते हैं तो नहीं, चांसेस you have to use the scientific. Okay, I got your question. What I'm suggesting is overuse. Overuse. जितनी चीजें जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक टर्मोलॉजी जितनी भी जरूरी है वो होनी ही चाहिए, लेकिन जैसे कि सिंपल टर्म्स है, सो डोंट मेक दो सिंपल टर्म्स वेरी कॉम्प्लेक्स. ओके, मैं उसका एक सीधा एग्जांपल आपको बताऊंगा अभी कि अगर आप एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ने के लिए डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन द लैंग्वेज इज वेरी 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 टफ, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कहना क्या जाता है, तो विल यू साइट इट? नो, यू वोंट साइट इट. क्योंकि वो कहना क्या चाह रहा है वो जो समझ में ही नहीं आ रहा, बिकॉज ही हैज यूज्ड नहीं. सो यू जितना जरूरी है कि आपको सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. Sir, your voice is not clear. Okay. No, sir, it is still Unfortunately, cracking. because of unfortunately because of this the power Now, sir, it is cut clear. off. It is clear now. It is now clear. Okay. मैं एक और चीज आपको अभी सजेस्ट करूंगा, because the last paper we have published one paper in the Elsevier, the last one. तो वहां पर as I think so ईशान already told कि जब भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग ऑन द रन, ओके, सो या तो आप कच्छ पे काम कर रहे हैं, तो आपने जैसे इंट्रोडक्शन लिखा और आपने सारा का सारा जितना भी साइटेशन था वो सब 2010 का यूज किया, या तो ओल्डर इन 2010 2012, अभी चल रहा है 2024. दैट मीन्स आपने थॉरो लिटरेचर रिव्यू किया ही नहीं है एंड योर पेपर विल गेट रिजेक्टेड. ठीक है, सो देयर आर few very high impact journals जो 10 to 20% of your citation should be of last 5 years. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये चीज फ्रेंड्स आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 2024 में आप पेपर लिख रहे, 2025 में आप पेपर लिख रहे, और आपका जितना भी पेपर में साइटेशन है उसमें कोई भी साइटेशन 2012 के बाद का नहीं है. दैट डायरेक्टली मीन कि आपने 2013 के बाद का एक भी आर्टिकल पढ़ा नहीं है. सो यू आर नॉट अवेयर अबाउट द लेटेस्ट फाइंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. सो आप जब भी रिसर्च या तो लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं पेपर के लिए या तो थीसिस के लिए, ट्राई टू ऐड पब्लिकेशंस. ओके, और ये लेटेस्ट आपको कहां से मिलेंगे? गूगल स्कॉलर से इजीली मिल जाएंगे. देयर आर मेनी वेबसाइट
provide you the most easiest use. Or Google में हम दीजिए तो डेटा चाहिए रिसर्च पेपर, तो वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा. Yes, sir. Hello, Darshit sir. हाँ, yes. First of all, sir, Gaurav sir is a little bit busy in some other work. No problem. Okay. So, behalf of the Department of Research and Development and the Ph.D. scholar from Science faculty, we thank you so much, sir, for giving us such enlightening lecture, and you provided with a lot of knowledge, sir. So, if anybody have any question, then freely ask to the sir. And I also like to thank the Research and Development Department of the university, Dr. Gaurav, and also, as well as his team, for providing me the opportunity to interact with the students. Again, I wish all the best to all the students, and I hope कि this do's and don'ts will definitely help you in your future endeavors. जहाँ जहाँ पर हमने गलती की है वहाँ पर आप गलती मत करिए. Okay, sir. Yeah, okay, ठीक है. So once again, thank you everyone. So should I stop sharing? Sure, sir. Yeah, Thank okay. you, sir. Thank you. પ્લીઝ બધા મીટિંગ ને લીવ કરી દેજો અત્યારે. આપણો નેક્સ્ટ સેશન 2:30 ના સ્ટાર્ટ થશે. 2:30 ના હું લિંક મોકલી દઈશ.